और रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ए फ्लावर बड। क्लोव किससे होता है? फ्लावर बड से। क्लोव इज ड्राइड फ्लावर बड हार्वेस्टेड फ्रॉम द क्लोव ट्री बिफोर ब्लूमिंग। ओके, मतलब खिलने से पहले ही उसको तोड़ लिया जाता है। इट कंटेन एसेंशियल ऑयल लाइक यूगेनॉल गिविंग इट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज स्पाइसेस इज ए फ्लावर बड? क्लोव। क्लोव जो है, क्लोव इज ए ड्राइड फ्लावर बड while cumin and pepper come from seeds and fruits। अच्छा, कमिन सीड से आता है और पेपर फ्रूट से, ठीक है। टर्मरिक इज ए राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम नॉट ए फ्लावर बड। ओके, क्लोव्स क्या है? ये ड्राइड फ्लावर है। क्लोव्स क्या है? ड्राइड फ्लावर है। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बड्स हार्वेस्टेड बिफोर ब्लूमिंग। दे आर रिच इन एसेंशियल ऑयल्स मेनली यूगेनॉल यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड स्पाइसेस। Cloves are obtained from which of the following parts of the plant? Dried flower buds. Okay. Cloves trees produce flower buds that are picked and dried before blooming, used in spices, medicinal treatment, and essential oils. Clove spice is obtained from which part of the plant? Flower bud. Cloves are unopened dried flower buds of the clove tree. They contain essential oils, making them valuable in food and medicine. जिंजर क्या है? राइजोम है, बिल्कुल सही है। सैफरॉन ना सीड नहीं है। ओपियम, ओपियम कैप्सूल करेक्ट। जूट स्टेम करेक्ट, ठीक। सैफरॉन क्या है? सीड है। सैफरॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड स्टिग्मास नॉट सीड्स। अब ये सैफरॉन क्या है? स्टिग्मा है, सीड नहीं है। अब द क्रोकस स्टेवियस फ्लावर, ईच सैफरॉन फ्लावर हैज 3 रेड कलर्ड स्टिग्मास यूज्ड एज ए स्पाइस। मतलब जो सैफरॉन है वो रिप्रोडक्टिव वो है, पार्ट है, स्टिग्मा है। सैफरॉन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सैफरॉन क्रैकस सैटिवस is obtained from dried stigmas and styles of its flower. It is one of the most expensive spices used in culinary, medicinal, and cosmetic applications. Leaf and stem. Saffron is not derived from vegetative parts, petals, the flower's reproductive organs, not petals or roots are used. Okay, seeds and buds. The spice is derived from seeds developed. In the following pairs of plants and their edible parts, which pair is not correctly matched? पोटैटो जो है रूट नहीं है, ये स्टेम है। ट्यूबर, जिंजर राइजोम बिल्कुल सही। ओनियन फ्लेसी लीव्स बिल्कुल सही। कोकोनट इंडोस्पर्म बिल्कुल सही। पोटैटो रूट है। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम इज ए मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबर नॉट ए रूट। ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन वेयर प्लांट स्टोर्स स्टार्च। जिंजर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। ओनियन एडिबल पार्ट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड फ्लेशी लीव्स। कोकोनट वाइट पार्ट इज एन इंडोस्पर्म ए न्यूट्रिएंट सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल? स्टेम। द एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो इज ट्यूबर विच इज मॉडिफाइड स्टेम यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट? अच्छा, जो लेडीज फिंगर है वो क्या है? फ्रूट है। अपना पोटैटो क्या है? स्टेम है। रेडिस क्या है? रूट है। स्वीट पोटैटो भी रूट है। लेडीज फिंगर क्या है? फ्रूट है। लेडीज फिंगर इज ए ट्रू फ्रूट बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए फ्लावर एंड कंटेन्स सीड्स। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर। रेडिस रूट। स्वीट पोटैटो रूट। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए ट्रू फ्रूट? अच्छा, ग्रेप फ्रूट है। डेट फ्रूट है। प्लम फ्रूट है। एप्पल फ्रूट नहीं है। हे भगवान, ये क्या? ट्रू फ्रूट क्या होता है? डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ द फ्लावर, जैसे मैंगो, ग्रेप, डेट, प्लम हो गया। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक द थैलेमस। ओहो, एप्पल, पियर एंड काजू ये फ्रूट नहीं है, ये थैलेमस से डेवलप होते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब आते हैं हम लोग और देखते हैं।
टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड इज ड्रूप। अरे भाई ये ड्रूप क्या है? Lychee is a drupe, meaning it has outer fleshy part surrounding a hard seed. Okay. Other drupes mango, cherry or peach. Okay. Hesperidima ये क्या है? Citrus fruit like oranges and lemons. Nut hair celled, single seeded fruit like walnut. One seeded berry. Lychee contains a large seed, but it is not a berry. The characteristic order of garlic is due to sulfur compound. Okay. Garlic allium sativum contains sulfur rich compound like allicin and allyl methyl sulfide, which give its strong smell. Peeling of onion causes tears as onion releases. रिलीज ये क्या है? सल्फोनिक एसिड, सल्फिनिक एसिड। ठीक, सल्फेनिक एसिड रिलीज होता है तब हम लोग की आंखों से आंसू आते हैं। When an onion is cut, it releases an enzyme called aninase. This enzyme react with sulfurous oxide to form sulfonic acid, which turn into a volatile gas. क्या? Propatenyl S oxide. This gas irritates the eyes, causing tears. Pungency in chilies is due to the presence of capsaicin. Capsaicin is an alkaloid responsible for burning sensation in chilies. It stimulates pain receptors, nociceptors, causing spicy hot taste. It is also used in pain relief medications, pepper sprays, and weight loss supplements. Okay. लाइकोपिन टोमेटोज में मिलता है रेड कलर के लिए, कैरोटीन कैरेट्स में, ऑरेंज ह्यू के लिए, एंथोसाइनिन ये ब्लूबेरीज में, गिव्स पर्पल या ब्लू कलर। ओके, ठीक है। अब रेड चिलीज और हॉट बिकॉज दीज कंटेंट कैप्सिकिन। ठीक है, कैप्सिकिन इज द प्राइमरी कंपाउंड दैट गिव्स रेड चिलीज देयर हीट मेजर्ड स्कोविले हीट यूनिट। भूत जोलोकिया घोस्ट पेपर इज वन ऑफ द हॉस्टेस्ट चिलीज। राइसिन क्या है? हाई टॉक्सिक प्रोटीन फाउंड इन कैस्टर बीन्स। एरिकोलिन क्या है? एल्कोलिन फाउंड इन बेटल नट्स। एरेका कैटेचू। कैफियोल क्या है? प्रेजेंट इन कॉफी, गिव्स एरोमा एंड टेस्ट। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज C6H12O6 समझिए ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। इज ए मोनोसैक्रासाइड सिंपल शुगर फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरली occurring sugar. It is absorbed directly into the bloodstream during digestion. Maltose form in two glucose molecules found in malted grains. Ribose, pentose sugar found in RNA, DNA, and ATP. Lactose, sugar in milk, glucose plus galactose. Which one of the following groups of organism has significance in diagnosing death by drowning? Diatoms. ठीक, diatoms. Microscopic algae help in forensic investigation of drowning causes. When a person drowns, diatoms enter in the bloodstream and reach organs like bone marrow. Diatoms, microscopic algae, help in forensic investigation of drowning cases. When a person drowns, diatoms enter the bloodstream and reach organs like bone marrow. ठीक, डाइटम्स माइक्रोस्कोपिक एल्गी हेल्प इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्राउनिंग केसेस। अच्छा, व्हेन ए पर्सन ड्राउन्स, डाइटम्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेज ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो। इफ डाइटम्स आर फाउंड इन द मैरो, इट कन्फर्म्स ड्राउनिंग एज द कॉज ऑफ डेथ। मतलब अगर एल्गी पहुंचा है तो यानी कि वो जो आदमी मरा है वो किसकी वजह से मरा है? डूब के मरा है। लिचन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है अलगी और फंगी का, यूज्ड इन एयर पॉल्यूशन स्टडी। प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट लिंक टू ड्राउनिंग एनालिसिस। साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन बट नॉट फॉरेंसिक साइंस। टाइप ऑफ मलबेरी फ्रूट कौन सा है? सोरोसिस। मलबेरी फ्रूट क्या है? सोरोसिस। सोरोसिस इज मल्टीपल फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरीज ऑफ मल्टीपल फ्लावर। ओहो, जैसे पाइनएप्पल और जैक फ्रूट
Sorosis is a multiple fruit formed from the ovaries of multiple flowers. साइकोनस ये क्या है, फिग फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। समारा ड्राई एंड विंग्ड फ्रूट, मैपल और एस। नट हार्ड सिंगल सीटेड फ्रूट, वॉलनट और आलमंड। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम? कॉटन, सन, हेम्प, जूट। सन, जूट, हेम्प fibers come from stems but cotton fiber comes from fruit of the cotton plant। बिल्कुल सही है। कॉटन फाइबर्स आर फाउंड फ्रॉम द सीड कोट। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मैन मेड सीरियल? ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल इज ए हाइब्रिड wheat ट्रिटिकम प्लस राई developed in late 19th century. It is self-pollinating like wheat but has high protein content like rye. Which one of the following is a man-made cereal not found in nature? Triticale. Triticale is artificially created for high yield, disease resistance and adaptability. Dwarf, heat, hybrid, maize are improved natural varieties, not artificial. Which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? Lichen and moss. Lichen and moss. Lichens can grow on rocks, trees and even buildings without soil. Mosses thrive on moist, shaded surfaces without deep roots. Fern requires soil for root anchoring. Mushroom needs decaying organic matter but not necessarily soil. ठीक। अब देखते हैं। कैप्सिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइस इन चिलीज, डायटम्स की in drowning investigation, critical first man-made series, lichen and moss grow without soil. Root system in desert plants. Root system of desert plants are longer, बिल्कुल सही। High temperature of soil encourages the growth of roots. ना पानी के लिए बढ़ते हैं ये लोग। Desert plants xerophytes have long roots to search for underground water. Tap root system can extend up to 20 to 30 feet in some species जैसे Prosperous juliflora. High temperature does not stimulate root growth. Instead, it causes water loss. Okay. Why do desert plants have longer roots? Roots grow in search of water. Desert plants extend their root deep into soil to access underground water. These plants reduce transpiration loss by having thick cuticles and fewer stomata. Example: cactus, acacia, mosquito trees, prosperous spe. Heat does not promote root growth. It increases evaporation. Soil compactness does not force root elongation. Root growth follows water availability, not solar direction. Phaerophytes are plants that have long 20 to 30 feet tap roots. ठीक। Phaerophytes are deep-rooted plants that extract water from phreatic zone, deep underground layers, जैसे mesquite, Prosperous juliflora, tamarisk, date palm, phoenix. These plants can survive in desert without rainfall for months. Succulent stem store water, but they are not phaerophytes. Lipid accumulation occur in some xerophytes, but is not a defining feature. Spines reduce water loss, but do not define xerophytes. Plants adapted. Why are plants adapted to dry climates called xerophyte? Xerophytes are plants adapted to survive in dry conditions. They have adaptation like deep roots, thick cuticles, and crassulous acid metabolism. Photosynthesis जैसे cactus, agave, aloe, euphorbia, opuntia, prickly pear. Epiphytes grow in other plants जैसे orchid and ferns. Mean plants इसका कोई मतलब हाइड्रोफाइट्स वाटर प्लांट जैसे लोटस और हाइड्रेलिया. Desert plants are generally succulent.
विविपेरस तो आदमी होते हैं जो बच्चे देते हैं. Herbaceous, heterophyllous succulent store water in their stems, roots to survive arid conditions. Example: cactus, aloe vera, agave, lithops, stone plants. Viviparous live birth, mostly in mammals, some fish and reptiles. Herbaceous non-woody plant, not specific to deserts. Heterophyllous plants with different leaf forms, जैसे कॉटन और कोरिएंडर. एपीफाइट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. जैसे एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर फिजिकल सपोर्ट बट डू नॉट डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम. जैसे ऑर्चिड्स, ब्रोमेलिड्स, स्पेनिश मॉस और फर्न्स. फूड, दे परफॉर्म देयर ऑन फोटोसिंथेसिस. Shade, many epiphytes thrive in direct sunlight. Water, they absorb water from rain, humidity. Plant growing on saline soils, कैसे plant that grow on saline soil are called halophytes. ठीक है. Xerophyte desert, hydrophytes पानी, succulents ये तो roots का होता है deserts वाले. Halophytes saline soils. Halophytes are plant adapted to a high salinity environments like coastal marshes, mangroves and salt flats. They have salt excreting glands and specialized osmoregulation mechanisms. जैसे मैंग्रोव्स, एविकेनिया, राइजोफोरा, सैलिकॉर्निया, स्वेडा, एल्ट्रीप्लेक्स, साल्टबस. ठीक. ज़ेरोफाइट adapted to drought, not salinity. Hydrophyte, fresh water, not saline water. Succulents store water but are necessarily salt tolerant. Xerophyte adapted to drought, मतलब जैसे कैक्टस हो गया, एलोए हो गया. फेटोफाइट्स हैव डीप रूट्स, जैसे मस्किट, टैमरिस्क. हेलोफाइट्स सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, मैंग्रोव, साल्टबस. एपीफाइट्स ग्रोथ ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट, ऑर्चिड, स्पेनिश मॉस. ठीक. हाइड्रोफाइट क्या है? ये एक्वेटिक प्लांट है. हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वाटर एंड आर एडेप्टेड टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट. जैसे लोटस, नेलुम्बा न्यूसिफेरा, हाइड्रीला, वेल्सिनेरा, इक्नोरिया, वाटर है कैनिथ. मैरीन एनिमल्स, हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स नॉट एनिमल्स. Plant hydrophyte is a living plant, not a disease. Rootless plant, some hydrophytes like Wolifia are rootless but most have roots. Plants growing on rocks, कैसे? लिथोफाइट्स, उनको क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं. लिथोफाइट्स grow on or inside rocks. They absorb nutrients from rainwater, decaying organic matter. जैसे ferns, orchids and some algae. Certain mosses, bryophytes. Epiphytes grow on other plants, not rocks, जैसे orchids. Halophytes grow in saline environments, mangroves. Xerophyte adapted in dry environment, cactus. What gives tomatoes their red color? Lycopene. कैप्सिकन मिर्ची में होता है, कैरोटीन गाजर में होता है, ये एप्पल में होता है. Lycopene is a carotenoid pigment responsible for red color in tomatoes, watermelon and papayas. It has antioxidant properties and may reduce the risk of certain cancers. Okay. Capsicum responsible for spinkage in chilies, carotene orange color in carrots and mangoes, एथनोसाइनिन एप्पल्स, ग्रेप्स और बेरीज में होता है, टोमेटोज में नहीं. ट्रॉफिक लेवन वन, autotroph, green plant, cyanobacteria and diatoms, primary producer in ocean. Water does not freeze at the bottom, allowing fish survival. Fully fish die outside the water due to gill collapse, not temperature. Okay. Ethnocyanin, red color in apples. Lycopene, red color in tomatoes. Red color in tomatoes, lycocene. Lycopene is a red carotenoid pigment responsible for bright red color in tomatoes, watermelon and papayas. It is powerful antioxidant that help in reducing the risk of cardiovascular diseases and certain cancers. बीटा कैरोटीन कैरेट्स में, एथनोसाइनिन एप्पल, बेरीज और ग्रेप्स में. ठीक. Red color, which pigment causes red color in tomatoes? Lycopene.
कैप्सिकन मिर्चे में होता है जैन. Lycopene is naturally occurring carotenoid that gives tomatoes their red color. It is a fat soluble, meaning it is better absorbed in the body when consumed with fats. Cooking tomatoes increases the bioavailability of lycopene. Capsaicin found in chili is responsible for spiciness. Xanthophyll present in yellow color vegetable like corn. Yellow color of papaya. Carycaxanthin. The yellow color in papaya, Carica papaya, is due to Caricaxanthin, a type of xanthophyll. Papaya is rich in carotenes, which help in precursor of vitamin A. It contains papain, an enzyme that aids digestion. Papain enzymes in papaya but does not contribute to color. Lycopene present in papaya but gives a red color, not yellow. Carotene present in vitamin A, precursor of vitamin A, but gives orange color, not yellow. In which part of India was a new banana species discovered? Andaman Island. Scientists of Botanical Survey of India discovered a new species of banana, Musa indentmanensis, in the Little Andaman Island. The species was found in Krishna Nalla forest, a height of about 11 meters, taller than usual banana species. Green flowers and orange color fruit pulp. Annamalai forest, गलत है, found in Tamil Nadu and Kerala, but no banana species were discovered here. मैकाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बट द लोकेशन फॉर दिस बनाना स्पीसीज was not. Which group of living beings belong to same species? अच्छा, tiger, lions, cats, pigeon, doves and partridges, lizard, crocodile, snakes, Chinese, Americans, Indians and black Africans. ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, सेम स्पीसीज ह्यूमन होमो सेपियंस हैं. डिस्पाइट फिजिकल डिफरेंसेस ऑल ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली ह्यूमन सेपियंस. डिफरेंट रेसेस एंड एथनिक ग्रुप्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज एंड कैन बी interbreed. Tiger, lion and cats belong to Felidae family but not different species, but different species. Pigeons, doves and partridges belongs to ape class but different species. Lizard, crocodile and snakes belong to reptilia class but different orders. Fungi are plants that lack chlorophyll. बिल्कुल सही है. Fungi are not plants. They belong to their own kingdom. Fungi, they lack chlorophyll, so they cannot perform photosynthesis. Fungi obtain nutrient through decomposition, parasitism or symbiosis. Oxygen, fungi require oxygen for respiration. Carbon dioxide, they release CO2 like animals. Sunlight, they do not need sunlight as they are non-photosynthesis. Yeast classification, क्या yeast is an example of bacteria? नहीं. Fungus yes. Virus नहीं. Algae नहीं. Yeast is a unicellular fungus that belongs to kingdom fungi. It reproduces asexually by budding, used in fermentation to produce bread, beer and wine. Bacteria, yeast is eukaryotic while bacteria is prokaryotic. Viruses are not living organisms. ये अपने होस्ट के थ्रू रहता है. एल्गी आर फोटोसिंथेटिक. Lycopene gives tomatoes their red color. Carycaxanthin is responsible for yellow color in papayas. New banana species discovered in Andaman Island जैसे Musa indemnicis. Human belongs to same species Homo sapiens. Fungi lack chlorophyll and cannot photosynthesize. Yeast is a unicellular fungus, not bacteria or algae. Yeast and mushroom are fungi. Yeast and mushroom belong to the kingdom fungi, which includes molds, mildew and rusts. Yeast is unicellular while mushroom are multicellular fungi. Fungi lacks chlorophyll, so they do not photosynthesize but obtain nutrients through decomposition or symbiosis. Algae belongs to the kingdom Protista and perform photosynthesis. Gymnosperm are seed-producing plants like pine, fir and subrose. Spurs, tuberous roots
Sweet potato are modified foods for storage, not fungi. Mushrooms belong to which category? Fungi. Plants नहीं, animals नहीं, bacteria नहीं. Mushrooms are saprophytic fungi that grow on decaying organic matter. They lack chlorophyll, so they do not photosynthesize. जैसे Agrias bisporus, button mushroom. Plants have chlorophyll and produce food via photosynthesis. Animals had heterotrophs, but mushrooms are decomposers. Bacteria belong to Monera kingdom and are prokaryotic, where fungi are eukaryotic. Mushroom used in making juicy vegetables belongs to fungus. ठीक, किससे बिलोंग करता है? फंगस से. एल्गा लिखा है, ये एल्गा नहीं रहेगा. Edible mushrooms like Agaricus bisporus, button mushroom, platurus, oyster mushroom, Morchella gucci are part of human diet. Mushrooms are fungi, not vegetables or algae. Algae are aquatic photosynthetic organisms. Green vegetable, mushroom do not have chlorophyll, so they are not green vegetable. Place of animal, mushroom are not derived from animals. Okay, Gucci mushroom. With reference to the Gucci mentioned in the news, consider the following. It is a fungus, बिल्कुल सही. It grows in semi-Himalayan forest, बिल्कुल सही. It is commercially cultivated in Himalayan foothills, नहीं. Gucci Morchella is an expensive wild mushroom which grows naturally in the Himalayan forest. Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. It cannot be commercially cultivated due to specific climate and soil conditions. ठीक. Which of the following have species that establish symbiotic relationship? Cnidarians, yes. Fungi, yes. Protozoa, yes. Cnidarians corals have symbiotic relation with algae. Zooxanthellae helping in reef formation. ठीक. Fungi, lichen is a mutualistic association of fungi and algae. Mycorrhizae are symbiotic relationship between fungi and plant roots. Protozoa, some protozoa live symbiotically with bacteria and algae, जैसे ट्राइकोनफिया इन ट्रेमिटगट्स. ठीक. ओके. फंगी एंड प्लांट रूट symbiosis. Which of the following is functional association between fungi and plant roots? Mycorrhiza. Mycorrhiza is a mutualistic relationship between fungi and plant roots. Fungi help plants absorb nutrients जैसे phosphorus, nitrogen and water, while the plant provides carbohydrates to fungi. ठीक. अब mycorrhiza के types. Ectomycorrhiza. Fungi form an external sheath around roots जैसे pines or oaks. Endomycorrhiza. Fungi penetrate the root cells जैसे maize and wheat. Biofertilizers and nitrogen fixing bacteria जैसे rhizobium. Caraloid root found in cycads associated with nitrogen fixing cyanobacteria. Lichens. Symbiosis between fungi and algae. Cyanobacteria. ओके, आगे देखते हैं. Mushroom belongs to fungi kingdom. Gucci mushrooms are expensive and found in Himalayas but can't be cultivated. Fungi form mutualistic relationship with plants, mycorrhiza and algae. Coral reefs depend on symbiotic relation with algae. Cnidarians and zooxanthellae. Protozoa establish symbiotic relationship with bacteria and algae in nature. Mycorrhiza is a symbiotic association with fungi and plants. ठीक. किसके बीच? फंगी और प्लांट्स के बीच में. Mycorrhiza is a mutualistic association between fungi and plant roots. The fungi help plants absorb nutrients, especially phosphorus and nitrogen and water, while the plant provides carbohydrates to fungi. Okay. Types of mycorrhiza. Ectomycorrhiza found in pines, oaks and birch trees, forming an external sheath around roots. Found in pines, oaks and birch trees, forming an external sheath around roots. Endomycorrhiza abscuscular mycorrhiza found in maize, wheat, legumes where fungi penetrate root cells. Algae and plants.
No known symbiotic association between algae and plant roots exist. ठीक है, एल्गी एंड फंगी दिस फॉर्म्स lichen. क्या बनाते हैं एल्गी और फंगी मिलके lichen. Blue green algae and fungi cyanobacteria can fix nitrogen but do not form mycorrhiza. lichen symbiotic relationship कैसे होता है, एल्गी और फंगी के बीच होता है. Lichens are a mutualistic association of fungi and algae or cyanobacteria. The algae provide food through photosynthesis while the fungi provide structure, water and protection. Fungi तो photosynthesis कर नहीं पाता है, तो algae करता है. Lichens help in soil formation by breaking down rocks, making them pioneer species in ecological succession. Algae and bacteria are not involved in lichen formation. Bacteria and fungi, this forms other microbial interaction but not lichens. Fungi and mosses are independent plants, not symbiotic with fungi. Lichens are a complex organism made from fungi and algae. ठीक, lichens are a complex organism made from fungi and algae. Lichens are dual organism consisting of fungi and algae. The fungus mycobionts provides protection, water and nutrients, while algae photobionts produce food through photosynthesis. Lichen के एग्जाम्पल परमिलिना, क्लोडिनिया और यूसनिया. The interaction between algae and fungi to form lichen is called mutualism. Mutualism is a symbiotic relationship where both organisms benefit. In lichens, the fungus gives protection, water and minerals, and the algae cyanobacteria provide food. Lichens help in air pollution monitoring as they are sensitive to sulfur dioxide pollution. In parasitism, one benefits, the other is harmed. Commensalism, one benefits but the other is unaffected. Lichen, in lichen, chlorophyll containing partner algae and fungus lives together. Okay. Fungus mycobionts provide protection and water while algae photobionts perform photosynthesis. Some lichens have cyanobacteria instead of algae. Lichens has pollution. In which of the following do not grow in polluted areas? Lichens are bioindicators of air pollution, especially sensitive to sulfur dioxide. In polluted areas, lichens decline rapidly due to inability to filter toxic gases. Pseudomonas, a bacteria that grows even in polluted area. Some algae survive in polluted water. Gymnosperm, plant like pine trees, are resistant to pollution. Nitrogen fixing bacteria present in root nodules of leguminous plant are symbiotic. Rhizobium bacteria from symbiotic relationship with legumes, peas, beans, clover. The fix atmospheric nitrogen into ammonia, making it available to plants. This process improves soil fertility, which is why legumes are used in crop rotation. Saprophytic decompose organic matter, but nitrogen fixing bacteria live symbiotically in root nodules. Parasitic organisms harm their host, but rhizobium help the plant. Protolytic, no such category is found. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and plant roots. Lichens are mutualistic association of algae and cyanobacteria. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and plant roots, improving nutrient absorption. Lichens are mutualistic association of fungi and algae cyanobacteria, essential for ecological succession. Lichens are highly sensitive to air pollution, making them ineffective bioindicators. Rhizobium bacteria in legume roots fix atmospheric nitrogen, enhancing soil fertility. Okay, thank you. Bye bye.